So just give me a cue when should I begin? Okay, we are live right now. All right. Hello, everyone. Welcome back to our weekly career class. My name is Muskan, and I'll be hosting today's live session. Thank you so much for joining in. In today's career session, we will be talking about how a student can crack NEET exams and what other career options are there in this sector. We will also be clearing a lot of doubts about how to make your career in the medical sector, even if you do not clear your NEET exams. Not just that, also what challenges you might face and how to tackle them. So, if you are a NEET aspirant or someone who is curious about the medical world, then keep on watching this live. So, before we start, if you all have any questions, please do not hesitate to use the live chat. You can ask any question or you can share any of your thought. We will be taking up your questions towards the end of the live session. So yeah, let's dive right into our topic for today's session. We are welcoming our speaker, Dr. Abhishek Sarkar. He's a dedicated consultant optometrist and assistant director at Cantonment General Hospital, Prayagraj. Welcome, Dr. Abhishek. Thank you so Thank you much very for much. joining in. You're most Thank you so welcome, much for Muskan. joining in today. Yeah. So, Dr. Abhishek, Yeah. we can you start by knowing your journey, a little education journey of yours? Yeah, sure thing. Just a second. Yeah, there we go. I hope you guys are able to see my screen over there. Is Yes, everything yes, we audible can and see. everything visible? Yes, yes. Okay. Yes, Muskan, as Muskan already introduced me, my name is Dr. Abhishek Sarkar and I'm an optometrist. And my highest degree is master's in optometry. Okay. And I'm gonna be narrating in English as well as in Hindi. Okay, so if there is any problem, you can just raise your hand and just give me a call or whatever. Okay, so the first slide here in front of me is the title is My Journey from Education to the Professional Journey. So the first thing that I want to say about this is that it was not an easy task because, as most of you know, that optometry is considered a paramedical profession, and of course it is one. But to you can say to become from a basic, you can say class 12 pass and undergraduate with no medical history whatsoever because there are no doctors in my family. I am the first one. So it has been a very long and perilous journey. So before I venture into that, I want to say something about myself, about my past, because I've completed my 10th plus 2 from Bethany Convent into a school from there's in Allahabad. Okay, it's a very nice convent school, an English medium school, and well, I'm not gonna enumerate all my teachers over there, but whatever I am today, it is because of them. But the main problem that I faced while I was in class 10 and when I was graduating from class 12 was that the you can say the scope of services or the scope of career choices they are very concise in our Indian society. क्योंकि किसी भी घर में ये होता है कि for example I was speaking to my juniors the other day, it was almost a year and a half ago, or they were almost I was actually teaching a class there, and it was a classroom full of approximately 45 to 48 students, and we were just having sort of, you can say, mock conversation, and I asked them to come over the podium and just write down whatever trade they think they're gonna take up in their life on the whiteboard there. So I was amazed to see that in a class of approximately 50 people, all they managed to do was jot down not more than 18 trades. They included become an engineer or a doctor or an IS officer, an IPS officer, join the army, the Navy, Air Force, the entire armed force, and so on and so forth. I was very shocked about that. That I'm standing here in a crowd of 50 people, or they can't even cross a threshold of 30. You can say 30 trades. So that is when I thought that there are so many things, there are so many fields, there are so many career options to explore. लेकिन यहाँ किसी को इस बारे में पता नहीं है. People actually are very unaware. And the main problem with our society is that when it comes actually when I say this, I'm going to blame my parents and our elders. That
if we decide to take up a stream of physics, chemistry, biology, they automatically consider us for the profession of a doctor. And if we take up a stream of physics, chemistry, and math, they are going to push us into the stream of engineering. Normally, yeah, okay. Now, as some of you must know, and for those who are uninitiated, I'm going to tell you that I am not a NEET qualifier. मैंने NEET का एग्जाम ना appear किया ना मैंने कभी qualify किया. As I already told you, the optometry is a paramedical is a paramedical study, and I started my journey by first of all by completing my diploma in optometry. Then I proceeded on to do my bachelor's, and then finally I completed my master's. And at this very moment, I'm pursuing my PhD in the same subject. तो अब देखिए होता क्या है. The very first day when I joined the hospital, it was a multi-specialty hospital in my home district, Prayagraj. I was, well, as everyone knows, I was a very fresher and I had practically zero experience. And I just had spent 2 years in the field of, in any sort of medical field. For me, it was the field of optometry. So, हुआ ये था कि first of all, I was a very skinny fellow. When I joined the office, when the patients used to come into my chamber, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. The problem was that आपके साथ भी होगी that if you walk into a doctor's chamber, a doctor's office, and if you see a very skinny, very little fellow sitting on the chair in front of you, देख के समझ में आ रहा है कि that person might not be having a lot of experience, or you won't want that person to treat you or to prescribe you medicines, of course. And at that Totally time was a agreed. Totally agreed. yeah. Totally This agreed. happens. This actually happens because when you walk into Yes, an yes. office, you want to see someone quite an experienced person to deal with you, especially when it comes to your health. Okay. So that was a very big problem for me. And people used to come in there and they used to ask me, "ये डॉक्टर साहब कब आएंगे?" Now that is a very awkward situation there. कि भाई मैं ये बोलूं that no, I am the doctor here, although I was a junior doctor at that time. लेकिन ये बोलना अपने मुंह से that I am the doctor there, that is very awkward. But still somehow 2 साल बीते. I had to put on some weight for people to take me seriously. तो ये हुआ वहां पे. And through and through, I was a very good student back in the school in my school days. जब मैंने class 10, 12 किया, I was a very good student. I had scored more than 80% in my high school as well as my intermediate. ठीक है, लेकिन ये था कि during my intermediate, जो मेरा मतलब जो circle था, I just got mixed up with some very bad students and all. और उसके बाद फिर क्या धीरे धीरे आई जस्ट लॉस्ट माय इंटरेस्ट इन स्टडीज. उसका कुछ भी. हाँ, इसमें एक चीज मैं और आपको बताना चाहूंगा. दिस एक्चुअली गोज फॉर ऑल द यंगस्टर्स जो कि मुझे अभी सुन रहे हैं, फॉर ऑल ऑफ यू पीपल. एंड इफ योर पेरेंट्स आर लिसनिंग टू दिस, मैं उनसे तो स्पेशली ये बात कहना चाहूंगा, डोंट स्टाइफल योर चिल्ड्रन. This happens a lot in the Indian society that the mom and the dad, when the parents or the guardian, whoever they are, they try to make the child walk on their road. जैसे वो चले हैं, अक्सर ये हम लोग का एक मतलब वो एक मीम भी आता है और हम लोग में एक मजाक भी होता है कि हमारे दादा तो 10 किलोमीटर पैदल चल के और 3 नदियां तैर के जाके उसका स्कूल जाया करते थे. ऑल ऑफ अस हैव हर्ड दोस स्टोरीज. ये होता है. इसका सब मीम भी बहुत ज्यादा आजकल मैं देखता हूँ सोशल मीडिया काफी आता है. सो एक्चुअली में होता क्या देखिए, what our parents and our guardians they fail to understand is that the situation that they had faced in their childhood and what we have faced in ours and what the present generation is facing in theirs, these three are very different scenarios. देखिए है क्या. For example, I am 35 years old. My generation is that generation which has seen the transition of an entire age. हमारी वो जनरेशन, वो लास्ट जनरेशन थी who got their photographs clicked on a real camera जो पुराना वाला आता था, which just had a capacity of 30 or so pictures. And our generation is that generation also, which knows that you can click practically countless pictures on a memory card. तो हमने ट्रांजिशन देखा है from that period to this period. प्रॉब्लम ये हो जाती है कि our parents they fail to understand that. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि in the Indian households, practically this in most of the cases this is the dad who is doing these things, कि वो बच्चे को एक पर्टिकुलर रास्ते में ढकेलते that you need to walk down that path, you need to go to quota and you need to join this coaching, you need to become a doctor.
the first thing and the foremost thing that they should understand is that you don't need to do anything. You need to do what you are good at and what you actually want. इस बारे में बहुत सारी मूवीज है, बहुत सारे मतलब देयर आर मेनी स्टोरीज एंड ऑल, आप सब लोग जानते भी होंगे, आई एम नॉट गोइंग टू इन्यूमरेट दोस थिंग्स, कि अगर आप एक ऐसे वो भी था, देयर वाज अ सेइंग ऑफ सॉर्ट्स, कुछ ऐसा ही था कि इफ यू जज अ बर्ड बाय इट्स कैपेसिटी टू स्विम अंडर वाटर, दैट बर्ड इज गोना स्पेंड इट्स एंटायर लाइफ थिंकिंग इट्स अ फेलियर. एंड इफ यू जज अ फिश बाय इट्स कैपेसिटी टू फ्लाई इन द एयर, दैट फिश इज आल्सो गोना डू द सेम. भाई मछली को हवा में उड़ने को होगा तो वो भी फेलियर है. अब एक चिड़िया से कहो पानी के नीचे तैरो तो मैं 1 घंटा, तो वो भी फेलियर है. एंड दिस इज व्हाट हैपेंस विद आवर इंडियन सोसाइटी. हमारी सोसाइटी में सबसे बड़ी चीज यही होती है. एंड इस चक्कर में होता क्या है कि द स्टूडेंट्स दे don't actually realize what their full potential is. Today's lecture, I believe it is on this very topic. What are you going to do if you are unable to crack NEET? ठीक है, तो we'll move on to the next slide. Yeah, cracking the NEET exam. देखिए, sorry, I'm having a little bit trouble in my throat. We can proceed to the next page. Huh? Yeah, sure. Right. So the first point in there is cracking the NEET exam. Well, as you all must know, that in order to qualify the National Eligibility Cum Entrance Exam, you need to have a PCB background, physics, chemistry, and biology. Biology means zoology as well as botany. Okay. So यहाँ पे सिर्फ नीट की बात कर लें या किसी भी चीज की बात कर लें, या इट कुड इवन बी क्रैकिंग द आईआईटी एग्जाम, द फर्स्ट एंड वेरी द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड हियर इज डेडिकेशन. ये देखिए, you cannot hit a target as long as you're not focused. कई बच्चों के साथ ये एक प्रॉब्लम होती है, मैं उस पर भी आऊंगा बाद में. थोड़ा सा एक चीज आपको और बता दूं, क्योंकि बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है क्या है बच्चों के साथ, कि दे डोंट अंडरस्टैंड द डेफिनेशन ऑफ फोकस. फोकस का मतलब वो ये समझते हैं कि इफ आई सबमर्ज माई सेल्फ इन होल टेबल लोड ऑफ बुक्स, वो मुझे फोकस दिलाएगा. दैट इज नेवर द सॉल्यूशन. मेरे पास बहुत सारे बच्चे, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, इन माई डेली प्रैक्टिस, कम से कम मेरे पास दिन में या मान ली 2 दिन में एटलीस्ट ऐसे 2 से 3 बच्चे आए थे who are suffering from multiple I won't say diseases but multiple syndromes. Syndrome मतलब होता है, it's a collection of symptoms that finally becomes a disease after a long time. जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन है आज के टाइम में, दैट इज जब मैं छोटा था. फॉर एग्जाम्पल व्हेन आई वाज इन क्लास 7, इट वाज बैक इन 2002, मुझे तब चश्मा लगा था. एट दैट टाइम I was the only one with spectacles in a class of approximately 20 people. आज के डेट में वो रेशियो हो गया 1:5. हर 5 में से एक इंसान चश्मा लग रहा है. And one of the most, you can say one of the biggest reason for this is that कि किसी बच्चे को इतना ज्यादा उसको झोंक दिया जाता है, इतना ज्यादा पढ़ाई में उसको डुबो दिया जाता है कि that kid spends almost, you can say, like 8 to 9 hours per day just reading and just exercising his medial rectus muscle. Medial rectus muscle वो मसल होता है जो आंख को अंदर तरफ खींचता है, आंख को कन्वर्ज कराता है. वो 8-9 घंटा लगातार आंख कन्वर्ज करके, एंड दैट किड इज जस्ट ट्राइंग टू cram up whatever is in front of him or her. तो और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ से आती है? मम्मी लोग तरफ से आती है. फलाने के बेटे को देखो, वो इतने घंटे पढ़ते, तुम कितने घंटे पढ़ते हो? दैट रियली इज नॉट द आंसर टू एनीथिंग. भाई, हाउ मेनी आवर्स यू आर स्पेंडिंग on a single chapter or a single topic or a single book, that really doesn't matter. What matters is that how much you're able to understand that whatever you're reading. अगर आप 10 मिनट में उस चीज को समझ सकते हैं, so you don't need to invest an entire hour on that topic. और मेरे पास जो भी बच्चे आते हैं, मैं उनसे कहता हूँ कि सबसे बड़ी चीज आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि whenever you're trying to do something on the range of your near vision, मतलब near vision मतलब होता है कि from your eyes up to a distance of 45 to 50 centimeters, इसके अंदर कोई भी काम कर रहे हैं, always take a break after a 20 minutes of interval. 20 मिनट काम किया, फिर 2-3 मिनट ब्रेक लिया, during which you need to get up from your chair. बेड की बात मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, बिकॉज बेड पे बैठ के या लेट के पढ़ना, इट इज नेवर फीजिबल, ना तो आपकी बॉडी के ना आपकी माइंड के लिए. Whenever you need to study, you need to study on a chair and table. You need to use that. And आज के टाइम में एक बहुत बड़ी चीज हो रही है, that people are using their cell phones to study. ठीक है, तो देखिए, सेल फोन आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि नॉट एवरीवन हैज अ टैबलेट और अ लैपटॉप, बट द थिंग इज दैट अगर एक बेसिक लैपटॉप, बेसिक टैबलेट आपको, पुट यू अराउंड, लेट्स से
20,000 rupees, लगभग वही आएगा. If you are that much focused on your studies, the first thing you should invest in something that is gonna provide you comfort at the highest level. जैसे आज के टाइम में ये हम देखते हैं कि भाई फोन के अपने सामने आप रख लीजिए तो आप कितनी देर तक उससे पढ़ पाएंगे, बट स्टिल जिस समय पूरा सर यहाँ फ्रंटल हेडेक पूरा भारी हो जा रहा है, सर बहुत ज्यादा दर्द कर रहा है, आफ्टर दैट बच्चे फिर भी उससे लगे रहते हैं, पढ़ते रहते हैं. दैट इज नॉट द वे टू प्रिपेयर फॉर एनीथिंग. ठीक है. तो सॉरी मैं थोड़ा सा ऑफ टॉपिक हो गया. तो वी आर टॉकिंग अबाउट क्रैकिंग द नीट एग्जाम. सो फॉर दोज पीपल जो वाकई में चाहते हैं कि नीट को क्वालिफाई करें, तो पहली चीज जैसा मैंने बताया, इट इज फोकस. द सेकेंड थिंग इज दैट टू फैमिलियराइज योरसेल्फ विद द एंटायर सिलेबस ऑफ नीट. नीट का सिलेबस क्या है, वो बेसिक आपके एनसीईआरटी सिलेबस पे ही बेस्ड है. उसके एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आपके आते हैं, दे आर बेस्ड अपॉन द बायोलॉजी एंड साइंस बुक्स ऑफ क्लासेस 10 to 12. नाइन्थ का भी थोड़ा बहुत आता है, बट नाइन्थ का बहुत ज्यादा उसमें टॉपिक नहीं है. द बेसिक कवरेज इज फ्रॉम क्लास 10 अप टू क्लास 12. उसमें जो पढ़ेंगे वही चीज है. तो द वेरी बेसिक थिंग इज दैट यू नीड टू फैमिलियराइज योरसेल्फ. एंड मोर सो उसमें जो ज्यादा पार्ट है दैट इज ऑफ द जुलॉजी पार्ट. बॉटनी का हिस्सा है. ये बॉटनी के जो टॉपिक्स हैं वो आपके जो जब फार्माकोलॉजी आप पढ़ोगे, मेडिसिन पढ़ोगे, वहां पे आपको बॉटनी का रोल ज्यादा है. लेकिन ये है कि जब आप नीट क्रैक करने की बात करेंगे तो आपको जो टोटल जो वास्ट सिलेबस है, यू नीड टू बी वेरी फैमिलियर विद दैट सिलेबस. उसको जैसे नॉर्मली बच्चे करते हैं कि एक सरसरी दिखा देख लिया, दैट इज नॉट गोना हेल्प. एंड यू नीड टू प्लान योरसेल्फ. और सबसे मेन चीज आपको ये बता दूं, ईच एंड एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट दे हैव देयर ओन क्लॉक. अगले ही घड़ी के हिसाब से अपने आप को बिल कभी मत आप अपने आप को सेट करिए, बिकॉज दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक दैट अ पर्सन कैन डू. कि मेरे बगल वाला अगर 4 घंटे में काम कर रहा है तो मैं 3 घंटे में करके दिखा दूं, या मुझे 5 घंटे क्यों लग रहे. दैट इज नॉट द सोल्यूशन एंड दैट इज द मेन प्रॉब्लम. You need to adjust yourself as according to your own body, according to your own limits, according to your mental capacity. क्योंकि वो हो सकता है कि किसी टॉपिक को वो अच्छे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करूं, सिंस आई बिलोंग टू द फील्ड ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, मुझे फिजिक्स से और लाइट से बहुत प्यार है. बट दैट इज नॉट द सेम सिनेरियो फॉर माय फ्रेंड हु एक्चुअली इज अ कार्डियोलॉजिस्ट. हम लोग के इंटरेस्ट अलग है, हम लोग का काम अलग है. तो इस हिसाब से अपने आप को आपको डिजाइन करना पड़ेगा. यू नो डेजिग्नेट द पर्टिकुलर टाइम फ्रेम एंड द पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी टू अंडरस्टैंड सिंगल टॉपिक. एक धरने पे सबको आप नहीं नाप सकते. सेकेंड पॉइंट हियर इज दैट करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल. देखिए, अगर नीट आपने क्रैक कर लिया तो ऑफकोर्स ये तो आप सभी लोग जानते हैं कि इट ओपन्स द डोरवे टू अटेन एन एमबीबीएस डिग्री फॉर यू. ठीक है. दैट इज बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी की एक डिग्री आपको मिल सकती है अगर आपने नीट क्वालिफाई कर लिया. इफ यू क्वालिफाई द रिमेनिंग एग्जाम्स, जो कि आपका 5 साल, कहीं कहीं पे 7 साल का कोर्स भी होता है. आफ्टर दैट यू कैन बिकम अ डॉक्टर. आपके नाम के आगे डॉक्टर लग सकता है. उसके बाद क्या है, But वंस यू but Dr. Abhishek, but our doubt is, what if we or any student could not crack NEET? Then या what are the या the या consequences? I'm gonna come to that. I'm gonna come to that. मैं इस बार Please. थोड़ा सा मैं डिस्कस कर लूं कि व्हाट्स गोना हैपन इफ यू आर एबल टू क्रैक नीट. तो आपके सामने ये चीज है. फर्स्ट इज एमबीबीएस एंड सेकंड यू कैन गो फॉर द एडवांस स्टडीज. दैट इज यू कैन ईदर गो फॉर डिप्लोमा कोर्स जो एमबीबीएस के बाद होता है, और फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स, या फिर आप स्पेशलाइज करके आप एमडी या एमएसएल कोर्स आप कर सकते हैं, जो कि पीजी में ही आता है. ठीक है. नाउ एज टू address your question, what to do if you're unable to crack NEET. First thing, do not commit suicide. क्योंकि ये हमारे यहाँ पे ये इस तरह बहुत सारे घटनाएं हुई. हालांकि हंसने वाली बात नहीं, दिस एक्चुअली इज अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम. कई बच्चे इस तरह के हैं. Actually, it's a very serious problem. या Yes. दिस हैपेंस. बच्चे आईआईटी में एंट्रेंस नहीं ले पाए हैं, या बच्चे नीट क्वालिफाई नहीं कर पाए, एंड दे जस्ट गिव अप एंड दे जस्ट एंड देयर लाइफ. वी हैव मल्टीपल एग्जांपल्स ऑफ दैट. आप कोई भी Yes. न्यूज़पेपर कहीं पे भी सर्च करिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, यू गोना फाइंड प्लेथोरा ऑफ ऑल दोस इंसिडेंट्स. ठीक है. सबसे But पहली चीज, this is a, but we believe it's a effect of that students don't know other options. या So दैट इज that's अमेजिंग. when मैंने यही तो like मैंने कहा था ना. दैट इज व्हाट yeah, आई वाज सेइंग इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर, दैट द मेन प्रॉब्लम इज right, दैट right, agreed. मेन प्रॉब्लम इज दैट people don't know the other options. देखिए, now in this screen you can see
यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। द फर्स्ट ऑप्शन इज ऑफ अ फिजिशियन, जो कि आपका जनरल प्रैक्टिशनर, दैट इज अ पर्सन हु हैज अटेन्ड द डिग्री ऑफ एमबीबीएस और एन एमडी। द सेकंड इज सर्जन, जो कि आपका एमएस होता है, देन देयर आर स्पेशलिस्ट कोर्सेज। ठीक है, ये तो फर्स्ट वाला तो बात होगी एमबीबीएस की। ठीक है, उसके बारे में बहुत ज्यादा मैं एलैबोरेट अभी नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज हमारा टॉपिक है वो सेकंड से लेके 10 पॉइंट, और 10 तो दीज आर जस्ट एग्जांपल्स, मतलब अनलिमिटेड है। देयर करियर अपॉर्चुनिटीज, देयर अनलिमिटेड। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, पहला तो मैंने वही जैसे बताया आपको कि डोंट गिव अप, हताश मत होइए। इट इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास आगे बहुत कुछ करने को है, एंड आई कंसिडर माई सेल्फ एज एन एग्जाम्पल, a person who has never even appeared in NEET exams, but today I am holding one of the key posts in a Cantonment General Hospital. Cantonment General Hospital आप लोगों को पता होना चाहिए. It is a hospital run by the Ministry of Defense, one of the Yes. premier agencies of our country. ठीक है, ये एक्चुअली हमारा हॉस्पिटल जो है, इट रन्स अंडर द सुपरविजन ऑफ द जनरल ऑफिसर इन कमांडिंग, जो जीओसी जो होते हैं आपके, मतलब एक किसी भी एरिया का जो कैंटोनमेंट होता है, यू कैन से ही इज द मेन बॉस ऑफ दैट कैंटोनमेंट, एंड आवर हॉस्पिटल रन्स इन अकॉर्डिंग टू हिम, एंड द डोर्स ऑफ आवर हॉस्पिटल आर ओपन टू एवरीवन। वहाँ कोई भी आके इलाज करा सकता है, एज अपोज टू द मिलिट्री हॉस्पिटल, जहाँ पे सिर्फ मिलिट्री के पर्सन ही जा सकते हैं। तो मैं अपने आप को इस बात का मतलब वो मैं समझता हूँ कि, एंड एट दिस वेरी मोमेंट आई हैव 15 डॉक्टर्स who have a degree of MBBS, and they are working under me. So I think that itself is an example that I think we have, I think we have cracked some kind of misconception here that only NEET can make you a senior doctor. exactly that is what I'm saying, that there is a very big misconception. और सबसे बड़ी चीज देखिए मुस्कान, मैं जो बच्चों से पूछता हूँ वो ये है कि ड्यूरिंग द कोविड पीरियड हम लोगों ने एक चीज देखी, बिफोर कोविड एंड ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज ऑफ कोविड, लोगों को ये समझ में आया कि डॉक्टर तो भगवान होते हैं। लोगों को ये समझ में आया, ये बात उन्होंने मानी, ठीक है, मानता हूँ। अप टू एन एक्सटेंट हम लोग भगवान तो नहीं है, बट वी आर द नेक्स्ट बेस्ट थिंग दैट गॉड हैज मेड ऑन दिस अर्थ। ठीक है, वो बात अपनी जगह सही है, बट भगवान की ठीक बात हम लोग नहीं आते। देयर आर सम अदर पीपल जिनकी वजह से हम हैं, एंड दोज पीपल आर माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिसकी यहाँ इंडिया में कोई बात ही नहीं करता, बिकॉज वी आर द वन हु प्रेस्क्राइब मेडिसिन। हम लोग वो दवा लिखते हैं। भाई सामने पेशेंट आया, we interviewed the patient, we well performed a background check, जितना वो बता पाया उसकी background history हमने ली, with jotted it down, and then we prescribed the medicine as per symptoms। जो भी उसे प्रॉब्लम है हमने मेडिसिन दे दी। अब मेडिसिन की आपको नॉलेज कहाँ से है? फ्रॉम द बुक्स ऑफ कोर्स, जो हमने किताबें पढ़ी। लेकिन उस किताब में लिखा किसने कि वो बीमारी है क्या, कैसे उसको डील करना है? फॉर एग्जाम्पल एबोला, यू नो इट्स वेरी कंटेजियस, वेरी डेडली वायरस। किसको पता था? कोविड-19 क्या है, किस चिड़िया का नाम है, हु न्यू दैट? उसको डॉक्टर ने तो नहीं किया। डॉक्टर्स की टीम थी ऑफ कोर्स, देयर वाज अ सर्टेन टीम ऑफ डॉक्टर्स जो उस बीमारी को समझने की कोशिश कर रहे थे, बट एट द टॉप ऑफ दैट टीम वाज सिटिंग अ माइक्रोबायोलॉजिस्ट, क्योंकि उसका वही काम है। एपिडेमियोलॉजिस्ट, उसका वही काम है। इन लोगों का काम है, दे आर द वंस हु स्टडी द डिजीजेस, दे आर द वंस who perform the experiments on those diseases, and they are the ones who tell the doctors what to prescribe during this particular illness. और ये रास्ता नीट से नहीं जाता, दिस इज एन ऑक्सिलरी वे। एक माइक्रोबायो बनने के लिए इसमें शायद नहीं, इसमें ना ना ना, इट्स नॉट इन दिस लिस्ट। ना तो माइक्रोबायोलॉजिस्ट का नाम इस लिस्ट में है, ना ही एपिडेमियोलॉजिस्ट का नाम इस लिस्ट में है। लेकिन ये दोनों ही रास्ते जो है ये नीट से होके नहीं जाते, बट ये नीट वाले को बताते हैं करना क्या है। सो आई थिंक यू गाइस आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि दिस इज नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास अपॉर्चुनिटीज बहुत सारे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जस्ट द अदर डे मैं एक, आई थिंक इट वाज अ जर्मन साइंटिस्ट, he is actually a neurosurgeon, and he's working in league with microbiologists as well as some I think there were PhDs from MIT, Massachusetts Institute of Technology, वहाँ के PhD holders थे। उन लोग से के साथ वो काम कर रहे हैं, and what he's trying to do is that he's trying to attach the nerve fibers, the neurons, to the electrical wiring, so that he could make working prosthetics for the amputees। मतलब मैं थोड़ा सा उसको elaborate कर रहा हूँ, शायद आप लोग ना समझ पा रहे होंगे। एम्प्यूटीज आर दोज पर्सन जिनका, उनकी एक्सट्रीमिटीज हाथ या पैर कट जाते हैं,
वो काम इसमें कर रहे हैं कि जो हमारे नर्व फाइबर्स हैं उनको इलेक्ट्रिकल वायरिंग से जोड़ने का। अगर इफ ही सक्सेसफुल, अगर वो सक्सेसफुल हो जाते हैं तो मतलब क्या होगा? भाई अभी जैसे मैंने ये हाथ को अपने इससे क्लेंच किया, फिस्ट को क्लेंच किया, दिस इज व्हाट माय ब्रेन सेंडिंग सिग्नल्स टू माय हैंड वाया न्यूरॉन्स कि हाथ को आपको इस तरह बंद करना है। सपोज ये हाथ कहीं से कट गया, now if we were able to attach a robotic hand over here and if we are able to attach its wiring to those neurons, तो आप सोच सकते हैं there won't be anything called amputees anywhere. amputees कोई चीज रहेंगी ही नहीं। तो ये सारी चीजें, अब देखिए जो लोग इस फील्ड में काम कर रहे हैं, या ऑफ कोर्स वन ऑफ देम इज न्यूरोसर्जन, बट द अदर पीपल हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड, दे डू नॉट इवन बिलोंग टू द फील्ड ऑफ मेडिसिन, दे बिलोंग टू द फील्ड ऑफ इंजीनियरिंग। रोबोटिक्स इंजीनियरिंग के वो लोग हैं, एमआईटी से आए। एमआईटी में मेडिसिन नहीं पढ़ाई जाती, एमआईटी इज अ correct. टेक्निकल इंस्टीट्यूट, but they are working in league with those people. So this is what I want to say, that expand your mind जहां तक हो सके। अगर जैसे बहुत पुरानी कहावत है, वन डोर क्लोजेस अदर ओपन्स। अब जैसे यहाँ पे देखिए सामने क्या है, ऑन स्क्रीन यू कैन सी द नंबर ऑफ प्रोफेशंस हियर। फर्स्ट ऑफ ऑल नर्स, नर्स इज द सेकंड, यू कैन से सेकंड इन कमांड व्हेन इट कम्स टू पेशेंट मैनेजमेंट। पेशेंट को मैनेज करने में डॉक्टर के बाद नर्स का ही काम होता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट नर्स का काम डॉक्टर से ज्यादा होता है, बिकॉज डॉक्टर जस्ट कम्स इन, चाहे वो पेशेंट आईपीडी का हो चाहे ओपीडी का हो। आईपीडी मीन्स इंडोर पेशेंट डिपार्टमेंट, ओपीडी मीन्स आउटडोर पेशेंट डिपार्टमेंट। डॉक्टर का काम क्या है? डॉक्टर इंटरव्यूज अ पेशेंट, या इफ द पेशेंट इज एडमिटेड ही विजिट्स अ पेशेंट, उसको देखेगा, उसको एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट से प्रोवाइड कर देगा, एंड दैट्स इट फॉर दैट टाइमिंग। उतने समय के लिए उतना ही है, बट आफ्टर दैट वो कितनी देर का काम होगा? बहुत ज्यादा आधा घंटा, 15 मिनट तो एवरेज है। बट द नर्सिंग स्टाफ इज दैट ग्रुप जो कि उस पेशेंट को पूरे टाइम में डील कर रहा है। दे आर द वंस हु आर एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पेशेंट्स वेलबींग। फॉर एग्जाम्पल अभी हमारे हॉस्पिटल में ही कुछ दिन पहले हुआ था, नर्सिंग नेग्लिजेंस हुआ, इस वजह से प्रॉब्लम्स हुई थी। तो वो क्या था? दैट वाज नॉट द फॉल्ट ऑफ द डॉक्टर, दैट वाज द फॉल्ट ऑफ द नर्सिंग स्टाफ। तो इसका मतलब क्या है? व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन इट कम्स टू सेविंग अ लाइफ फॉर रियल, द नर्सिंग स्टाफ, इट इज, जस्ट अ मिनट, Muskan, just I'm having some issues I think here. No worries, no worries. Okay, okay. You just need, you can Yeah, share yeah, it sure. again. It's okay. Yeah, sure, sure. Just want to do that. Is the screen sharing here? Yes, yes, you You can able to share. see my screen? Not yet. Not yet. That's what I was looking for. Oh, yeah. Very good. आया Yeah, Muskan? we can see it now. Yes. Good. Can you do it full screen? Yeah, yeah. Is it visible now? Yes. So, Dr. Abhishek, so according to you, can you name or list top three or top five careers that are available in medical stream, but people don't know, especially students don't know about them, that Well, the first those fields. stream that I've enumerated is the one that I am in right now, optometry. It's a very good stream. And there are basically two divisions of optometry. First is clinical optics, the second is dispensing optics. Clinical optics is that one that what I do, means managing patients and prescribing medicine, the entire work of a doctor. Dispensing optics is that stream जो कि आपने लेंस कार्ट का सब टाइटन का नाम सुना होगा। Their work basically is limited to providing spectacles and vision aids, chashma, contact lens, and all those things. वो उसमें है। So both of these streams are very lucrative. दोनों में पैसा बहुत अच्छा खासा है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, पैसा तो ऑफ कोर्स आएगा, बट इफ यू आर स्किल्ड, और अगर आपको जो रिस्पेक्ट मिलेगी इस फील्ड में, वेल आई से दैट इज अनमैच्ड। द सेकंड फील्ड इज द फील्ड ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट Okay. एक बहुत ही, एक्चुअली वी हैव लिटिल बिट लेस टाइम, तो मैं थोड़ा सा जल्दी में से बोल रहा हूँ, एंड सॉरी मैंने उधर भी टाइम ज्यादा ले लिया। It's okay. Happens. फिजियोथेरेपी इज अ फील्ड जिसकी हर डॉक्टर को जरूरत पड़ती है, बी इट अ गायकोलॉजिस्ट, बी इट एन ऑर्थोपेडिशियन को तो ऑफकोर्स पड़ेगी ही पड़ेगी, बिकॉज ऑर्थो के केसेस जो होते हैं बेसिकली फ्रैक्चर के, या वो मान लीजिए डिसलोकेशन या उससे रिलेटेड जो केसेस जो डील करते हैं, फिजियोथेरेपी इज दैट, फिजियोथेरेपिस्ट इज दैट पर्सन
जो कि आफ्टर अ पर्टिकुलर प्रोसीजर पेशेंट को मोबिलाइज करता है। ठीक है, Hmm. जैसे जब आपकी डिलीवरी होती किसी भी लेडी की, जब उसको बेबी होता है, बी इट बाय सी सेक्शन या जो नॉर्मल डिलीवरी भी हुई, उसके Hmm. बॉडी में बहुत ज्यादा एक्सर्शन होता है। तो उसको वापस उसके लाइफ में लाने के लिए यू नीड अ फिजियोथेरेपिस्ट। एक और डिजीज बहुत Hmm. कॉमन है आज के टाइम में है, दैट इज सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, जो गर्दन की यहाँ की हड्डी जो है दर्द कर जाती है, क्योंकि लोग हमेशा झुके रहते हैं। पीपल आर हैविंग अ लॉट ऑफ नेक पेन्स दीज डेज। कई लोग इस तरह के आते हैं, डेली कम से कम 6 से 7 पेशेंट आते हैं इस चीज के कि गर्दन बहुत दर्द हो रहा है। सो फॉर दैट यू नीड अ फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है। द थर्ड जॉब दैट आई कैन थिंक ऑफ इज द जॉब ऑफ अ नर्स, जो मैंने अभी बताया। आपको नर्स के बारे में मैंने आपको पूरा एनुमरेट कर ही दिया, so I won't go even deeper in that. So these are the top three professions that I think are better if you are not qualifying or if you're not opting for NEET. Right, right. Okay. Okay. So So, if we have some questions from our student side, yeah, of course. so we'll take first questions from Ruchita. She wants to know if someone is already a optometrist like you are. Okay. So, what Okay. are the career growth to a person who is already in that career? So it would first of all depend upon the exact position where that person is. As I already told you in my lecture, that to become an optometrist, you have three platforms. You can directly opt for a bachelor in optometry, or you can start from a diploma, which I did. Okay, not sorry, not three, but two platforms. Because in order to be a master of optometry, you need to have a bachelor's degree at hand. That is a paid course. Okay, so Correct, correct. yeah. So could you please repeat the question? I missed it from my mind. What she So asked me? Ruchita wants to know if you are already in a career like you are Yeah. in Okay. optometrics career. So Yeah. what are the career growth for someone who's already in the career with the MD degree? Yeah. How Yeah. Yeah. can Yeah. they Yeah. Oh, grow in their career? okay, okay, yeah. So I actually missed a question back there. So that was the first part. So first of all, you need to assess yourself at which level you are. And it would be my strong recommendation that if you are just a diploma holder, you need to enhance your resume as soon as possible, which means that you need to opt for bachelor courses too. And once you gain the bachelor degree, then you can say your options are very vast over here. As I already told you that there are two basic aspects of being an optometrist. You can be a clinical optometrist or you can be a dispensing optometrist. Dispensing, as I already told about the spectacles and contact lenses and all those vision aids. And when it comes to clinical, in clinical optometry, you actually get to be a doctor. That is the first thing. And when you start in either field, the you can say the remunerations or the income packages, they are very nice over here. For example, at this age, my basic salary at my hospital, it is 65,000 plus other incentives. So if you're even beginning in that field, your career is going to start from at today's age. I think it's going to start from at least 30,000 in either field, be it dispensing or be it clinical optics, and then you can grow as per your caliber. I think that addresses the question. Yes. We have another question from Ruchita only. Yeah. She wants to know, can you guide us on entrance exam for paramedical courses like BSc Radiology through AIMS, and are they tough as NEET? Yeah, the first thing is that when it comes to paramedical examinations, they are no less tougher than what we're gonna face during the NEET exams, and the preparation strategy is pretty much the same because the questions that they're gonna ask in those exams, they too belong to the same syllabus, same criteria as your NEET exams. The only difference is that for NEET examinations, you need to have a PCB background, that is physics, chemistry, biology. But for the paramedical exams, you can have either PCB or PCM, it doesn't matter. But your marks and your overall percentage there, it really matters in those exams. Okay. Other than that, the entire syllabus is basically the same because when doesn't matter which grade you opt for, you need to have the basics very clear, and that is what intermediate is all about. Right, right, correct.
Okay, so we have another question. So the we earlier we talked about the challenge that in India people don't know about certain job options, career options in the medical. So this we can take as a challenge to our society and to this student's life. So did you face these challenges, and if you faced, how did you cope up with these challenges? And being an optometrist itself, I think in the beginning it would Yeah, have been hard for you to yeah, exactly. get the clients and patients. So how did you manage to cope up with this challenge and Yeah, reach Muskan, to first, the first of position where all, you are today? first of all, I totally faced these challenges because as I later on found out that I have a knack for computers. I love computers and I'm an avid video gamer, even today, because after 10 o'clock, Okay, me and my brother, he lives in Calcutta, we just enjoy our online gaming sessions. Okay. And I'm very good with computers. But the problem is that while I was studying in class 12, my parents couldn't recognize that. And as you know, that a kid who's studying class 12, who is totally dependent on his family, he or she, they need to listen to their parents, whatever they say. And what problems that I discussed with the students earlier, which I was telling you about, that those students, that group of 50 people, they couldn't come on the whiteboard and couldn't jot down even 30 traits. I was also one of those students at that time because my mom or my dad, they didn't have any idea that this kid is quite fascinated with computers, so we should send him in that particular field. And as a matter of fact, the CS branch, it has shined itself, I'd say, in the last, what, 10 years. Before that, people were not very aware about this branch. So, of course, I had this problem. And as I already told you, that after intermediate, I got mixed up with some really bad people. I'm not going to tell you all the stories about that, but all in all, I was a very negative person and I was quite far away from my studies and my books. So at that time, optometry was just like, you can say, a way to get out of all that. And as a matter of fact, the college from where I started my studies, where I started my diploma, it belonged to a friend of my dad's. So he one day he counseled me, and before that I had no idea about this field whatsoever. I didn't know that such a thing even exists. He was the person who sat down with me and he explained to me about all the you can say the opportunities, basically what I'm doing right now, what I'm trying to do right now. He did that with me. Just the thing was that he it took him a lot of more sessions than what we are doing it today, and he explained to me about the entire potential of this field. And even till date, even today, I listen to that person, and that person's name is Dr. Rajiv Vash, who actually owns Global Eye Institute, from where I've done my diploma and my bachelor. He is one of the one of the most prime surgeons, ophthalmic surgeons in the entire district, and well, he's a very good surgeon. For example, if you talk about a cataract surgery, he can perform an SIC's cataract surgery within 15 minutes. That's longer that it takes him. Okay. So he was the person who guided me. So that is one of the most important. You need someone to guide you, to show you the path. Because other than that, you just have what? You just have engineering in one hand and medicine in the other hand, just like we saw in Three Idiots. We all remember that movie. That is the Very fact well for the said. entire Indian population. So of course I had those Very well problems. said. So, Dr. Abhishek, as we are reaching through the end of our session, I would ask for three major tips you want to give our students who are going to appear in medical exams or who are thinking their career in medical Well, sector. I'll do you one Three better. master tips for them. Okay, I'll do you one better. I'll give you four tips. The first is again, don't kill yourself if you're unable to crack the exams. Okay, no, all jokes aside. The first thing is that you need to focus yourself. You need a plan of action. Okay. And it's not that action plan which Iron Man took, it's that action plan which Captain America would take. Lay down a plan and then act accordingly. All right. The second thing is that you need to clarify your stream. Don't let people decide something for you. You need to assess each and everything and then decide. And the third and most important thing is that your intermediate and your high school numbers are important, of course. But even if you score marginal marks, it really doesn't matter because after a certain while, let's just say after you
have attained your first job, no one is going to ask you how much you scored in your high school and your intermediate. No one is even going to give a single damn about that mark sheet. People just want, for example, any person. Let's just say that let us say that Muskan has a company, and I'm applying to for a particular job position. The thing, and then there's another person who's applying for the same job. That person might have a very lucrative, very big resume. I have nothing, but I have the answer to all the questions. That man doesn't. So whom is she gonna have? She might not have me on a particular, on a you can say transparent or on a regular payroll, but she is gonna seek my help at some point, and she might be paying me something from the back door. This is what I believe in. That you need to have the answer to the to other people's problems. If you have that, life is just a breeze for you. These are the basic three tips that I would give you. Actually, we were about to end the session, but one last question came from Ruchita. I hope, Doctor, you don't mind. Okay. Um, so she has a very small question. She wants to know diploma is after 10th or 12th. Can we 12. get admission in degree through diploma also? Yeah, of course you can. First of all, diploma is after 12. And the best thing about diploma is that when you try to gain an admission in a degree course, you are able to bypass the first year. आपको फर्स्ट ईयर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने 2 साल डिप्लोमा कर लिया है आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एंट्री लेके यू कैन कैरी ऑन फ्रॉम देयर मतलब आपको सेकंड थर्ड और फोर्थ ईयर ही पढ़ना पड़ेगा जो 4 साल का कोर्स है आपके लिए 3 साल का हो जाएगा बिकॉज ये ऑलरेडी डिप्लोमा होल्डर मास्टर्स तो 2 साल का है यू कैन हैव टू डू दैट Okay, okay, okay. I hope Ruchita you got your answer. One question again ऑफ came कोर्स ऑफ कोर्स from Rizwan Satyani. He wants to know, I am from CS background currently, pursuing certified dispensing optician. As my डिस्कसिंग relative ऑप्टिक्स is an yes, CDO. As my relative is an optician, so that I can be optimistic with them. I want to know if I want to practice in US. What I know, I'm sorry, Rizwan, we cannot uh, understand your question. Can you type it again? आई So थिंक I ही think I think Rizwan wants to know about global opportunity of yeah studying yeah CDO yeah in I US. got that from his questionnaire I mean that's what he Yes, wants to know. he wants to practice CDO in US. So he wants to know your thoughts. He's a dispensing optician at this time, am I right? Pursuing certified dispensing optician. Yeah, he's Yeah, certified pursuing. dispensing He's a optician. student. Yeah, Yeah. yeah. Actually, optician and optometrist are two very different trades, but as far as I know, optician, a CDO course or CDO certification is a global certification. And then again, the same thing comes here. If you are trying to, you can say, search a job in any country, be it India or abroad, it doesn't matter. Being an optician is a skill. It is much less of a job and much more of a skill development entire thing. So if you have that particular skill and then you have a certification for that, I don't think there's any problem for you to practice anywhere in the world. You can go wherever you want. Because then again, you're going to have the answer to the problems. And the problem is that they need to have the spectacles to operate perfectly. जैसा कि रिजवान मैं आपको थोड़ा सा मैं हिंदी में बता रहा हूँ देखिए ऐसा होता क्या है जो आप काम कर रहे हो भाई इट्स अ वेरी गुड थिंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है फ्रॉम दोज पीपल जो लोग चश्मा लगाते हैं फिटिंग सही नहीं होती यू गाइस मस्ट हैव फेस्ड दोस प्रॉब्लम्स जो लोग चश्मा पहनते हैं कि कभी कभी लेंस के यहाँ पे फ्रेम में गैपिंग है समटाइम्स लेंस इज जस्ट कमिंग आउट ऑफ इट्स फ्रेम एंड ऑल दोस प्रॉब्लम्स तो ये इस चीज को करने के लिए जो फिटर होता है वो एक बहुत ही स्किल्ड प्रोफेशनल चाहिए होता है एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम जितने भी ऑप्टोमेट्रिस्ट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट हैं इलाहाबाद में वी आर फेसिंग अ वेरी डीप शॉर्टेज ऑफ गुड फिटर्स जो अच्छे चश्मे में फिट कर सके एंड एक्चुअली इस शहर में सिर्फ 4 फिटर ऐसे हैं जिनको हम लोग अपने स्पेक्टिकल्स देना पसंद करते हैं सो इट इज दैट मच रेयर ऑफ अ स्किल तो अगर आप अच्छा स्किल डेवलप कर लेते हैं एंड इफ यू हैव अ सर्टिफिकेशन फॉर दैट आई डोंट सी एनी प्रॉब्लम ऑफ यू वर्किंग एनीवेयर क्योंकि फिर से वही बात आएगी कि अगर उनसे किसी का इंटरव्यू होता है एंड इफ यू एबल टू फिट spectacle perfectly or in, whatever your job profile dictates अगर उस काम को ठीक से आप कर सकते हो along with the certification तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें Right.
So yeah, this was today's session. As we wrap up today's session, I want to thank Dr. Abhishek for sharing Most his welcome. insight. Thank you so much, Dr. Abhishek. It was a very helpful session, and I also learned a lot of things along with our students. So I hope you all got the answers to your questions. If you have any more questions related to your career, you need to ask. Doctor, can you put the last slide on your screen? Oh, yeah, just a second. Yeah. This one? So if you have any questions related to your career, you can simply scan the QR code on your screen and it will take you to our web app. There you can see an Ask Me Anything options where you can get answers directly from our expert counselors. So yeah, go ahead and explore. Don't forget to hit that subscribe button below to stay updated and never miss any of our weekly career classes and other insightful content. Thank you all for joining us. We hope you enjoyed today's session. Thank you so much, Doctor. It was a very insightful session, and we genuinely Okay. learned a lot of things today. Okay. So I'm going to stop the screen share now. Yes, yes. Okay.